हम डिस्कस करें बेटा मई जून 2020 वेरिएंस 42। कहीं कैलकुलेशन में आप हेल्प कर सकते हैं मेरी। A part 1, explain what is meant by the term polydentate ligands. Polydentate ligands means donate more than 2 lone pairs to the transition mat line so that more than 2 dative bonds are formed. ठीक है? When a solution containing EDTA4 minus is added to a solution containing cadmium ions, a new complex is formed. This equilibrium 1 की equation. Circle on the structure of EDTA4 minus the 6 atoms that forms bond with the metal ion. This one is first, second, third, fourth, fifth, sixth. जब भी तो बेटा हम इसको hexadentate ligand भी कहते हैं because it donates 6 lone pairs at a time. फिर वो कह रहे हैं write an expression for the stability constant for equilibrium 1 and states its unit. तो stability constant for first reaction की बात कर रहे हैं. ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपके रिएक्टेंट हैं, तो हम लिखेंगे concentration of product which is your EDTA2 minus. Charge has to be inside the bracket if you remember. You will get cadmium H2O taken 6 plus, then EDTA4 minus, right? Unit बेटा ये मोल पर डीएम क्यूब इस मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल, तो आपके पास यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी बेटा यहाँ से मोल पर डीएम क्यूब ओवर, ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब. आप जानते हैं कि ये दोनों यूनिट एक दूसरे कैंसिल होंगे, तो फाइनल यूनिट होगी 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब. तो बेटा फाइनल यूनिट इज गोइंग टू बी मोल इनवर्स 1 डीएम क्यूब. सही है? हम कभी भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखते हुए वाटर को यूज नहीं करते. ठीक है? ऑलराइट. B part. Cadmium ions form complexes with methylamine CH3NH2 and with 1,2-diaminoethane. This as shown in equilibrium 2 and 3. 1,2-diaminoethane is shown as En. Equilibrium 2 की stability constant की value given है. Equilibrium 3 के लिए भी stability constant की value given है. An equilibrium is set up between these two complexes as shown in equilibrium 4. इससे related delta H0 और delta S0 की value given है. K equilibrium 4 is the equilibrium constant for equilibrium 4. Write an expression for K equilibrium 4 in terms of K step 2 and K step 3. देखिए बेटा ये आपका प्रोडक्ट है और इस कॉम्प्लेक्स को हमने K step 3 से रिप्रेजेंट किया. इसका मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा. ये आपका रिएक्टेंट है और इस कॉम्प्लेक्स को हमने K step 2 से रिप्रेजेंट किया. इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा. तो आपके पास आंसर ये होगा कि स्टेप 3 ओवर के स्टेप 2. फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 फॉर इक्विलिब्रियम 4 at 298 Kelvin.
तो बेटा ये हो जाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। डेल्टा H नॉट की वैल्यू बेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्लस 0.840 माइनस टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन गिवन है। डेल्टा S नॉट की वैल्यू है प्लस 80.9, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा -23.3। ठीक है बेटे। State how the value of delta G naught changes as the temperature increases. Explain your answer. तो बेटा हमने बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो obviously this T delta S naught term becomes more negative. So delta G becomes more and more negative. Reaction is going to be feasible, right? तो हम यहाँ बताएंगे increasing temperature increases T delta S naught term becomes more negative. So delta G is more negative, hence reaction is feasible at high temperature. ठीक है? Question number 2. Describe and explain how the solubility of group 2 sulfates varies down the group 4 marks का। तो आप लिखेंगे down the group ionic radius increases charge density decreases lattice energy and hydration enthalpy both decreases hydration enthalpy decreases more significantly than lattice more significantly than lattice energy. Thus, the standard enthalpy change of solution is endothermic. If standard enthalpy change of solution is endothermic, solubility decreases. The trend in the decomposition temperature of group 2 peroxide is similar to that of group 2 carbonates. Suggest which of barium peroxide and calcium peroxide will decompose at the lower temperature. Explain your answer. Lower temperature means decomposition becomes easier. Decomposition उस वक्त easier होगी जब charge density ज़्यादा होगी. Obviously, calcium oxide will decompose at lower temperature. Calcium peroxide will decompose at lower temperature.
Why? Because calcium ions has a smaller ionic radius, so it has high charge density and polarization. सही? Magnesium iodate 5 decomposes when heated to form magnesium oxide, oxygen and iodine. Construct an equation for this. Magnesium iodate 5 is MgIO3 taken 2. इसको अगर मैं डिकम्पोज करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन में प्लस आयोडीन. ठीक है. Calcium iodate 5 is sparingly soluble in water. The concentration of its saturated solution is this at 298 Kelvin. 5.6 into 10 to the power minus 3 mole per dm. Write an expression for the solubility product of calcium iodide and state its unit. बेटा अगर मैं कैल्शियम आयोडेट 5 ले रहा हूं और मैं उसको आयोनाइज करूं, इट विल टर्न टू कैल्शियम आयंस एंड आयोडेट 5 आयंस. तो केस भी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ calcium ions and concentration of iodate 5 ions, क्योंकि उसकी 2 मोल्स ये पावर में चल रही है. इसकी यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब. इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर डीएम क्यूब. उसका स्क्वायर है तो मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6. और जब यूनिट्स मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो फाइनल यूनिट इज गोइंग टू बी मोल क्यूब डीएम माइनस 9. यानी ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब into ये हो जाएगा मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6. तो इट्स गोइंग टू बी मोल क्यूब डीएम माइनस 9. ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे calculate the numerical value of for case P of calcium iodate 5 at 298 Kelvin. ये इक्वेशन बनाई हमने calcium iodate 5. आप जानते हैं कि ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये 2 मोल है. तो अगर आपके पास कंसंट्रेशन थी 5.6 into 10 to the power minus 3 मोल per dm क्यूब, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम आयन की भी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी. लेकिन जाहिर सी बात है आपके पास आयोडेट 5 आयंस 2 मोल्स है तो 1:2 का रेशियो. तो अगर कंसंट्रेशन आपके पास 5.6 into 10 to the power minus 3 है तो मल्टीप्लाई कर 2 करके कितनी हो जाएगी? 11.2 into 10 to the power minus 3 मोल per dm क्यूब. केस पी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो केस पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए केस पी के एक्सप्रेशन में प्लेस कर दीजिए वैल्यूज को. कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है 5.6 into 10 to the power minus 3 मोल per dm क्यूब और ये है आपके पास 11.2 into 10 to the power minus 3. इसका स्क्वायर कर दीजिए तो केस पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7.02 into 10 to the power minus 7. I hope it makes sense to you. फिर वो कह रहे हैं when a few centimeter cube of concentrated calcium nitrate is added to a saturated solution of calcium iodate 5, a white precipitate forms. Identify the white precipitates and give an explanation to this. You know, this is the saturated solution, and if you add a concentrated solution of calcium nitrate, obviously common and effect follow किया जाएगा because concentration of calcium ion ज़्यादा होने से equilibrium backward जाएगा. जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड फेवर करेगा तो जाहिर सी बात है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम आयोडेट 5 पे इंक्रीज हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे as we add concentrated calcium nitrate in a saturated solution
then the concentration of calcium ion increases this favors equilibrium towards left hand side, hence white precipitates of calcium iodate 5 is formed. उसके बाद है iodized salt is sodium chloride mixed with a small amount of sodium iodate 5. 50 gram of iodized salt is dissolved in distilled water and the solution made up to 250 cl cube in a volumetric flask with distilled water. 50 cl of this solution is pipeted into an excess of acidified potassium iodide. ये equation आ गई बेटा. The iodine produced required 12.40 cm³ of 0.002 mole per dm aqueous sodium thiosulfate. ये आ गई equation. Calculate the mass of sodium iodate 5 present in 50 gram. तो बेटा मेरे पास सबसे पहला स्टेप होगा इसमें moles of S2O3 2 negative. मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है 12.4, मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है 0.002. मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरे पास 2.48 into 10 to the power minus 5 मोल्स आ जाएंगे थायोसल्फेट आयंस के. आप जानते हैं कि थायोसल्फेट आयंस और आयोडीन के दरमियान रेशियो आपको 2:1 का मिला है. अगर आपके पास 2.48 into 10 to the power minus 3 मोल्स minus 5 मोल्स हैं तो बताइए मोल्स ऑफ आयोडीन कितने होंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स ऑफ आयोडीन सही है. अब ये मोल्स ऑफ आयोडीन है और ये मोल्स ऑफ आयोडेट 5 आयंस है. ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आयोडेट 5 आयंस और आयोडीन के दरमियान ओके नो 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 माय बैड वेट. ये जो मोल्स आपने निकाले हैं बेटा ये 50 cm³ में राइट, जबकि आपने इसको 250 cm³ में मेकअप किया था. तो अब आप याद रखिएगा कि 50 cm³ में आपके पास कितने मोल्स हैं 1.24 into 10 to the power minus 5 मोल्स. और आपने इसको मेकअप कितने वॉल्यूम में किया था 250 cm³ में. तो 250 cm³ में आपके पास मोल्स कितने हो जाएंगे आयोडीन के 2.066 into 10 to the power minus 5. ओहो अच्छा एक मिनट. Recording in progress. तो ये हो जाएगा IO3 नेगेटिव रेशियो I2. ये 1 मोल है और ये 3 मोल है. आपने आयोडीन 1.24 into 10 to the power minus 5 मोल्स कैलकुलेट किया था. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा मोल्स ऑफ IO3 नेगेटिव कितने आएंगे बेटे. कैन एनीवन हेल्प मी, कैन एनीवन हेल्प मी ऑन द चैट प्लीज लिख दीजिए. Can anyone help me with that? 4.13 into 10 to the power minus 6. Thank you, Vidas. 4.13 into 10 to the power minus 6 moles in 50 cm³. और आपने ये सोल्यूशन मेकअप किया था 250 से. तो मेरा फोर्थ स्टेप होगा कि 50 cm³ में आपके पास है 4.13 into 10 to the power minus 6 moles. तो बताइए 250 में कितने होंगे जी बेटा. तो ये हो जाएंगे मोल्स
of IO3 negative in 250 cm cube कितने होंगे बेटा अस्मा? कैलकुलेटर नहीं है या सिर्फ साइंटिफिक चाहिए? Okay, no, thank you. 2.06 into 10 to the power minus 5 moles. आयोडेट 5 आयंस के जो मोल्स हैं वही सोडियम आयोडेट के होंगे, तो मास ऑफ सोडियम आयोडेट 5 आयंस हैं। 2.06 into 10 to the power minus 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 198 से, जो कि सोडियम आयोडेट 5 का एमआर है। तो बताइए आंसर क्या आएगा? Okay, 4.092 into 10 to the power minus 3 ग्राम, ये मेरा आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। कैलकुलेशन में बेटा आप लोग हेल्प करेंगे, ठीक है? उसके बाद वो कह रहे हैं द हाफ इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ आयोडेट 5 आयंस इज शोन। ये इसकी ई नॉट की वैल्यू भी गिवन है। वो कह रहे हैं यूज डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू प्रेडिक्ट वेदर अ रिएक्शन इज फीजिबल व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड आयोडेट 5 आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस आर मिक्स्ड। एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा ब्रोमीन की डेटा बुकलेट के अंदर इक्वेशन ये गिवन है और इसकी एसिडिटी की वैल्यू है मेरे पास प्लस 1.09 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर पॉजिटिव है, इसको मैं एज इट इज रखूंगा, ये फ्लिप होके लिखा जाएगा। जब ये फ्लिप होके लिखा जाएगा तो ये ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो रिएक्शन इज फीजिबल बिकॉज एसिडिटी की वैल्यू हमने ई नॉट सेल से कितनी कैलकुलेट की? प्लस 0.1 वोल्ट, ठीक है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज प्लग करी, मेरे पास 0.1 वोल्ट आया। इसका मतलब रिएक्शन फीजिबल होगा, कंप्लीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है? ये याद रखिए, रिएक्शन होगा, फिजिबल होगा बिकॉज पॉजिटिव साइन है, बट रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाएगा। उसके बाद है पार्ट जी, आयोडेट 5 आयंस रिएक्ट with sulfite ions in acidic solution at pH 5. The initial rate of reaction was found to be first order with respect to this, first order with respect to this, and first order with respect to hydrogen ion. Write the rate equation for this reaction, stating the units of the rate constant K. तो ये जगह rate equals to K, concentration of sulfite ions, concentration of hydrogen ions, and concentration of iodate 5 ions, ठीक है? यूनिट ऑफ K क्या है? अब यूनिट ऑफ K, तो रेट की यूनिट तो उन्होंने मुझे बता दी है, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स। तो हम थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा देते हैं। रेट की यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स और K एज इट इज रखेंगे। ये यूनिट हो जाएगी मोल क्यूब डीएम माइनस 9। तो फाइनल यूनिट होगी बेटा मेरे पास मोल इनवर्स 2 dm6 second inverse. Hope you can find the logic, get the point. ये मेरे पास the rate of reaction depends on the pH of solution. Assume all other concentration remains the same. Use the expression x, rate at pH 5, rate at pH 4 to calculate the value of x. तो बेटा आपने सिंपल करना क्या है? एक मिनट रुक जाइएगा, 5 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो आपके पास 1। pH equals to minus log
कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो पहले 5 के लिए निकालिए, आगे कैलकुलेट तो माइनस लॉग, ये हो जाएगा शिफ्ट लॉग -5, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 टाइम 10 टू द पावर -5, इससे रिलेटेड है 1 टाइम 10 टू द पावर -5। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालूं तो ये जाएगा शिफ्ट लॉग -4, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये एक्सप्रेशन यूज करके दोनों केसेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय आंसर, तो यू विल गेट 0.1 एंड दैट्स माय आंसर। ठीक है, ठीक है। नूर रिएक्शन उस वक्त फिजिबल होता है जब प्लस का साइन ई नॉट सेल प्लस, ठीक है बेटे। कंप्लीशन पर उस वक्त जाएगा जब प्लस 0.3 वोल्ट हो या उससे ज्यादा। Question number 3, part A. Complete the electronic configuration of an isolated gaseous nickel-2 ions. तो बेटा 4s से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 3d में 8 रह जाएंगे, तो 3, 4, 5, 6, 7 and this one is 8। ठीक है, निकल इज R1 3d8 4s2, जब निकल पे 2 प्लस चार्ज होगा 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 3d में 8 रह जाएंगे, 5, 6, 7 and this one is 8। ठीक, explain the origin of color in transition element complexes। you have 4 marks का part, so make sure कि बहुत अच्छे से explanation लिखें। हम लिखेंगे degenerate d orbital will split in 2 different energy groups due to electronic repulsion with ligands। ठीक है, energy gap between these 2 groups require a photon of specific frequency for DD electronic transition। As a result, certain wavelengths are not absorbed that corresponds to the color of the solution observed। Hexa, aqua, nickel-2 ions are green. They form a green precipitate with hydroxide ions in equilibrium 1 and a blue complex with ammonia in equilibrium 2। ठीक है, वो कह रहे हैं use Lee Shuttle's principle to suggest
explanation for the following observations. वो कह रहे हैं explain why aqueous ammonia is added clockwise to this a green precipitate is formed. तो आप जानते हैं aqueous ammonia को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ये बात हमने लेक्चर में आपको बताई है. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मींस कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. दिस फेवर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड सो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स अपीयर. सो आप यहाँ लिखिए on addition of aqueous ammonia concentration of hydroxide ions increases. This favors equilibrium towards right hand side, hence green precipitates are observed. फिर वो कह रहे हैं आपसे explain why when a large excess of aqueous ammonia is added to this, the green precipitate dissolves and a blue solution is formed. 1 mark का part है. तो लिखें on addition of excess aqueous ammonia, ligand exchange reaction takes place because ammonia is a stronger ligand than water. Ligand exchange reaction takes place. So this favors equilibrium towards right hand side, hence blue solution is observed. ठीक है. The complex ion nickel Br2Cn2 2- shows the stereoisomerism. Draw diagrams to show the two stereoisomerisms. Name the type of stereoisomerism. मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आए तो उस पर अप्लाई करें कंडीशन Ml2x2 की कंडीशन है. एंड व्हेनेवर यू हैव Ml2x2 की कंडीशन ज्योमेट्री स्क्वायर सिमिलर और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मुझे आइसोमेरिज्म बनाने हैं. तो बेटा ये एक Br हो गया, ये दूसरा Br हो गया, ये सिस हो गया और ये Cn जो है वो ट्रांस या आ गया. अब इसको ट्रांस बनाना है तो Br जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट अटैच हो जाएंगे कुछ इस तरह से. ये Br आ गया, ये भी Br है, ये ट्रांस हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, A part 1. When benzene undergoes nitration, a nitro group substitute at a carbon atom. State the shape around the substituted carbon atom. Benzene molecule has a geometry, planar geometry, या trigonal planar geometry. दोनों से ये इंटरमीडिएट में सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होती है. मैंने पढ़ाया है, लिखवाया है आपको. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में वापस ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा. वो कह रहे हैं नेफ्थलीन C10H8 is an arene hydrocarbon. ठीक है. When naphthalene undergoes nitration, a mixture of two organic compounds is formed. Each compound contains one nitro group. Suggest the structure of these compounds.
तो बेटा मैंने आपको पढ़ाते हुए जब मैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन पढ़ा रहा था, मैंने एक स्टेटमेंट आपको ये दिया था, लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी आप सुन सकते हैं कि पहला ग्रुप जो है वो बेंजीन की किसी भी कार्बन आइटम से अटैच किया जा सकता है, नो इशू एट ऑल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं पहला ग्रुप बेंजीन की इस कार्बन आइटम से अटैच कर देता हूँ और मैं पहले ग्रुप को इस कार्बन से। तो आप देखें दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, राइट। फिर वो कह रहे हैं नेफ्थलीन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस टू phthalic anhydride, carbon dioxide and water. Construct an equation for this reaction. Use O to represent an atom of oxygen from the oxidizing agent. नेफ्थलीन का फॉर्मूला था C10H8, उसको लिखते हैं। रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ऑक्सीजन एटम से, कन्वर्ट हो रहा है थैलिक एनहाइड्राइड में विच इज C8H4O3 कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। यहाँ पर 10 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ 8, तो 10 कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, सही है। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स पूरा करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 3, 2 times 2 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, तो मैं यहाँ पर 9 लगा देता हूँ बेटा, सही है। Yes Asma, you are right बेटा। Part C, the indicator phenolphthalein can be synthesized from phthalic anhydride and phenol under certain conditions. अब नोट कर लीजिए ये phenolphthalein इंडिकेटर का स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड बोला था हमने लेक्चर में इसको। Deduce the type of reaction shown by this equation. Beta, loss of water takes place, meaning condensation reaction. इसके बाद name the functional groups in addition to benzene ring present in the phenolphthalein molecule. Functional group कौन कौन से हैं आप जानते हैं, ये phenolic functional group है और ये ester functional group है, तो मैं phenol and ester लिख देता हूँ, बेंजीन के अलावा ये दो हैं। फिर वो कह रहे हैं phenolphthalein reacts separately with 2 reagents shown in the table. Complete the table by drawing the structure of the organic product form. Part of the structure has been given for you, stating the type of reaction. Excess of hot NaOH. So what we can do is कि बेटा बार-बार structure पेज टर्न करना पड़ेगा, तो हम जरा इसको लिख लेते हैं ताकि मैं बार-बार कॉपी ना करना पड़े, ठीक है। चलो देखिए, ये है मेरे पास फिनोल, ये दोनों NaOH से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे, ONA, ये भी बनाएगा ONA। हॉट NaOH है तो एस्टर का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा सॉल्ट में और ये अल्कोहल में, इफ यू नो माय नोट्स, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकता हूं और हाइड्रोलिसिस भी कह सकता हूं। ठीक है, अब देखिए एन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, जो ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना होगा तो एक ब्रोमीन यहां पर ऐड होगा, एक ब्रोमीन यहां पर ऐड होगा, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो 2 पर और 6 पर होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही, एक 2 पे और एक 6 पे होगा, ये 2 पे अटैच किया और ये 6 पे अटैच किया। ये एस्टर का जो बॉन्ड है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि एस्टर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यू नीड मोर और स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंडीशंस। इसको बेंजीन पे होने वाले तमाम रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
No, you can write esterification. You can write that. फिर वो कह रहे हैं phenolphthalein is an indicator and is represented by the formula HIN. Phenolphthalein HIN is a weak acid. दिया गया. The Ka value for phenolphthalein is this. ये Ka की value है phenolphthalein की बेटा at 298 Kelvin. The indicator changes color at approximate pH. Calculate the ratio at pH 8.8. तो भाई सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरे पास? pH equals to minus log concentration of hydrogen ion. pH 8.8 है, तो मैं यहां से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूं. ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन मेरे पास, ये हो जाएगा शिफ्ट लॉग माइनस 8, ये हो जाएगा 1 टाइम 10 टू द पावर माइनस 8 मोल per dm. Second, Ka equals to concentration of hydrogen ion, In negative ion over concentration of indicator. Ka की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5.0 into 10 to the power minus 10 equals to हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपने अभी कैलकुलेट करी pH के थ्रू, वो है 1 times 10 to the power minus 8. Concentration of In negative over concentration of indicator, आपने ये दोनों का रेशियो मालूम करना है, तो आंसर आएगा 0.315. ठीक है, ठीक है बेटा. वो 8.8 है, एक मिनट, शिफ्ट लॉग माइनस 8.8, एक मिनट बेटा, एक मिनट. ये है मेरे पास 1.58 into 10 to the power minus 9, और यहां पर भी होगा 1.58 into 10 to the power minus 9. ठीक है, ठीक है ना. फिर वो कह रहे हैं methyl orange is another acid base indicator. Its structure in aqueous solution at pH 4.4 is shown. वो कह रहे हैं only the structure of methyl orange. On the structure of methyl orange, circle the bond or bonds that makes this compound is di. तो बेटा कौन सी डाई होती है? एजो डाई होती है, तो एजो ग्रुप को सर्किल कर दीजिए. The color of this indicator changes between pH 3.2 and pH 4.4. Suggests the structure of methyl orange at pH 3. Assume the this group is unreactive. बेटा आप जानते हैं pH 3 है, तो जब pH 3 होगा तो solution acidic होगा. जब solution acidic होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन्स होंगे, तो नाइट्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, वो फौरन उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा. सही है, ये भी कर सकता है हाइड्रोजन एक्सेप्ट, और ये भी कर सकता है हाइड्रोजन एक्सेप्ट. 1 मार्क का है, तो आप इन तीनों में से किसी एक को करके दिखा दीजिए. ठीक है, मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ भी कर देता हूँ कि ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास भी लोन है. ठीक है बेटा. नूर बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, वो वीक एसिड और उसके सॉल्ट का बनता है. ठीक है, इंडिकेटर इज नॉट द बफर सॉल्यूशन बेटे. इसके बाद नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज कैन बी सिंथेसाइज्ड एज शोन. आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये स्टेप 1 में R बनेगा, स्टेप 2 में S बनेगा. ये अमाइन इस S के साथ रिएक्शन करके ये एसिड मिथाइल ऑरेंज बनाएगा. यार बेटा अमाइन किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिडाइल. तो इसका मतलब S नीड्स टू बी डाइजोनियम आयन. ठीक है, और डाइजोनियम आयन किससे बनता है? अमाइन से. तो इसका मतलब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम आयन बनाने के लिए. तो ये हो जाएगा मेरे पास
NH2, ये हो जाएगा SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सही है। अगर मैं NH2 को डायजोनियम आयन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और ये SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव एज इट इज। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज बनेगा। वो कह रहे हैं डिड्यूस द आइडेंटिटीज ऑफ कंपाउंड R and S एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स इन द बॉक्सेस। वो हो गए। सच एज द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 1। NO2 से NH2 में जाते हैं तो 10 कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएजेंट होता है, कंडीशन रिफ्लक्स होती है। NH2 से डायजोनियम आयन बनाते हैं तो सोडियम नाइट्राइट HCl रिएजेंट होगा, कंडीशन लो रूम टेम्परेचर, लो 10 डिग्री सेल्सियस होगी। सही बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द टर्म पार्टीशन कोफिशिएंट। मुझे पता है कि मैंने पार्टीशन कोफिशिएंट नहीं कराया, लेकिन मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें वो कवर हो जाएगा और कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको पार्टीशन कोफिशिएंट की थ्योरी भी कवर करूं। ठीक है, डोंट वरी, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है? पार्टीशन कोफिशिएंट इज बेसिकली अ रेशियो of the concentration of solute in two different solvents at equilibrium. So हमने जो बोला है वो इसकी डेफिनेशन है। It is a ratio of the concentration of solute in two different immiscible solution at equilibrium. अलर्ट रहना, परेशान नहीं होना। Kpc of benzoic acid between octane 1 mole and water is this. Kpc की वैल्यू गिवन है। तो हाँ, a solution of 0.4 gram of benzoic acid का मास गिवन है आपको। In 25 cm cube of octane 1 mole is shaken with 125 cm cube of water. यानी मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास एक वाटर की लेयर है और मेरे पास ऑक्टेन 1 मोल की लेयर है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक्वस लेयर है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ऑर्गेनिक लेयर है। तो मेरे पास दो लेयर है, दो डिफरेंट है, एक अल्कोहल और एक वाटर। सही है। कैलकुलेट द मास ऑफ बेंजोइक एसिड एक्सट्रैक्टेड इनटू द वाटर लेयर। मुझसे कह रहे हैं मास ऑफ बेंजोइक एसिड बताओ वाटर लेयर में कितना था। तो भाई मेरे पास दो चीजें, पहली चीज मेरे पास ऑर्गेनिक लेयर है और दूसरी चीज मेरे पास वाटर लेयर है। वाटर लेयर को हम एक्वस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वाटर लेयर भी। वाटर में कितना बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हुआ मुझे नहीं पता, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि x ग्राम ऑफ एसिड is dissolved in 125 cm cube of water। तो देखो मैं यहां से कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं बेंजोइक एसिड की इन वाटर लेयर। मास पता है, डिवाइड करूंगा 125 से तो ग्राम पर सीएम क्यूब पता चल जाएगा। एग्री। अब मुझे ऑर्गेनिक लेयर में कितना डिसॉल्व हुआ बेंजोइक एसिड ये भी नहीं पता, तो मैं बोलूंगा जनाब 0.4 ग्राम है, उसमें से x वाटर में डिसॉल्व हो गया तो बच कितना जाएगा 0.4 माइनस x। ये अमाउंट डिसॉल्व होगा 25 cm cube of octane 1 mole में। तो मैं यहां से कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं 0.4 माइनस x
divided by 25 ग्राम पर cm3। सो मुझे दोनों लेयर्स में कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी होती है, वो मैंने करके दिखाई। केपीसी का फॉर्मूला होगा ऑर्गेनिक लेयर ओवर एक्वस लेयर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ऑर्गेनिक लेयर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस लेयर यानी वाटर लेयर। केपीसी की वैल्यू गिवन है 79.4। एसिड में कितनी है ऑर्गेनिक लेयर में? ये है 0.4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 25 ओवर, ये हो जाएगा x अपॉन 125। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यानी ये वो मास है बेंजोइक एसिड का जो कि वाटर में डिसॉल्व हुआ है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Kpc of benzophenone between octane 1-ol and water is different from the value of Kpc of benzoic acid given in this। आप देखें इस बेंजोफिनोन में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, इसका मतलब इस बेंजोफिनोन का हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है तो इसमें भी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व ज्यादा होंगे। तो आप बताइए बेंजोफिनोन is more soluble in octane 1-ol because of a strong हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं पार्ट सी में बेंजोफिनोन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड इन टू स्टेप्स as shown in step 1। compound J a reactive intermediate is formed, compound J then reacts with organic compound K to form benzophenone। आपको पता नहीं याद है या नहीं, लेकिन मैं आपको समझा तो मैंने पढ़ाया क्या, मैंने नोट्स में ये लिखवाया है कि अगर आपको बेंजीन में कीटोन इंट्रोड्यूस करना होगा तो आपको असाइलेशन करना होगा, और असाइलेशन के लिए यू नीड एसाइल हैलाइड। इसका मतलब J शुड बी एसाइल हैलाइड, और एसाइल हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो मैं इस बेंजोइक एसिड को एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये बताया था कि इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ कीटोन इनटू द बेंजीन रिंग वी नीड an acylation process। an acylation करने के लिए I need acyl halide, क्योंकि मैंने बेंजोइक एसिड से बना दिया, और ऑब्वियसली acyl halide किससे रिएक्शन करेगा? बेंजीन से, तो K should be बेंजीन। सही है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड AlCl3 एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो acylation होगी, बेंजोफिनोन बनेगा। हमने एसिडोफिनोन बनाया था, वो बेंजोफिनोन बनेगा, ठीक है। क्रैक करना समझ में आया? मैंने कहा था कीटोन को इंट्रोड्यूस करना हो बेंजीन रिंग में तो असाइलेशन का प्रोसेस करोगे। असाइलेशन के लिए जरूरी है कि यू नीड टू रिएजेंट्स, द फर्स्ट वन इज एसाइल हैलाइड एंड द सेकंड वन इज बेंजीन। इसका मतलब K शुड बी बेंजीन एंड J शुड बी एसाइल हैलाइड। इस कंपाउंड से एसाइल हैलाइड बनाया बेंजोइल क्लोराइड, AlCl3 एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 1। COOH से COCl बनाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? PCl5 और रूम टेंपरेचर प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। Benzophenone can also be synthesized in two steps from bromomethylbenzene, ठीक है। ओके, अब प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टोटल कार्बन एटम्स काउंट करो मेरे साथ, ये हो जाएंगे 6 7। हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, और ये Br हो जाएगा, सही। यहाँ पर आपके पास C13H12 है, तो यहाँ लिखो C13H12, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा C6, यहाँ से मिलेगा H5, और इसका मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। याद करें, बेंजीन रिंग अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो अल्काइलेशन होगी, इसका मतलब मैं सिंपल प्रोडक्ट इस तरह से बनाऊंगा,
इसमें बेंजीन रिंग थी ना, तो अल्काइलेशन का प्रोसेस है, ठीक है। नेम द मैकेनिज्म ऑफ स्टेप 3 एंड सजेस्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो रहा है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन की जगह आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन पे होने वाले रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेप 3 में रिएजेंट्स एंड कंडीशंस। अल्काइलेशन में रिएजेंट्स क्या होंगे? बेंजीन होगा बेटा एक आपका C6H6। कंडीशन क्या होगी? हीट, सही है, और AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। अल्काइलेशन हो रही है ना, AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। Reduce the type of reaction in step 4। step 4 में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन होगी। फिर वो कह रहे हैं reduce the number of peaks that would be present in carbon 13 NMR spectrum of benzophenone। number of peaks for carbon 13। चलो वापस चलते हैं। देखिए एक पीक तो ये हो गई मेरे पास, दिस वन इज फर्स्ट, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? सेकंड। ये दोनों क्या हो जाएंगे? थर्ड। ये दोनों क्या हो जाएंगे? फोर्थ। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? फिफ्थ। टोटल 5 पीक्स होंगी आपके पास, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स ऑफ कार्बन एटम दैट वुड रिजल्ट इन डिफरेंट केमिकल शिफ्ट रेंजेस इन दिस कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजोफिनोन। तो बेटा बेंजोफिनोन में एक तो बेंजीन रिंग है, तो मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि जब बेंजीन रिंग होगी तो उसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 110 से 160 ppm होगी। फिर एक बेंजीन के साथ कार्बोनाइल है C6H5CO, इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 190 से 220 ppm होगी, सही है बेटा। हम यहां तक रख लेते हैं पेपर और हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि आज की क्लास में खत्म नहीं हो सकेगा, लेकिन याद रखिएगा हम नेक्स्ट क्लास में ये पेपर कंप्लीट करके अगला पेपर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इन दोनों पेपर्स की वीडियो मर्ज करके फिर आपको देंगे पूरी एक, ताकि एक फ्लो में मिले आपको, सही है। Recording in progress. The class of polymers called polycarbonates are made by the reaction of carbonyl dichloride COCl2 with a diol। डायोल डाइकार्बोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो पॉलीकार्बोनेट बनेगा और HCl रिलीज हो जाएगी। डिड्यूस द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन शोन है। जब लॉस ऑफ HCl हो यानी लॉस ऑफ मास हो तो ऑब्वियसली उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, आप भी जानते हैं बात। तो हम लिखेंगे कंडेंसेशन polymerization। Nalgene is a polycarbonate formed from the diol and dicarbonyl chloride। Draw one repeating unit of Nalgene। देखो मैं क्या करूंगा, एक मिनट बेटा मैं Nalgene लिख, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं और फिर इसको चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस क्या होंगे जरा देखिए, यहां से H चला जाएगा
यहां से भी H जाएगा, ये कन्वर्ट होगा COO में और ये भी कन्वर्ट होगा। सही है, यानी इस कंपाउंड के साथ ClCOCl रिएक्शन कर रहा होगा, इस कंपाउंड के साथ भी ClCO रिएक्शन कर रहा होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, HCl। फिर यहाँ का भी क्लोरीन जा रहा होगा, फिर यहाँ का भी क्लोरीन जा रहा होगा। तो हमने एक को हमने बॉन्ड कंटिन्यूएशन दिखा दी और एक को हमने CO बॉन्ड कंटिन्यूएशन दिखा दी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Identify two types of intermolecular forces that are responsible for these properties of naltrene। तो बेटा इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत बड़ा है, जहाँ हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वहां पर जाहिर सी बात है वैन वॉल फोर्सेस होती हैं। टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं, वैन वॉल फोर्सेस या फिर इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप भी है और CO बॉन्ड भी है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है इसलिए परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस भी होंगी। उसके बाद ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम कैंसिल कर देंगे इस पार्ट को। डीएनए भी हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया है, कैंसिल कर देंगे। पार्ट डी देखिए, मेनी पॉलीमर्स आर डिग्रेडेबल, स्टेट टू डिफरेंट प्रोसेसेस बाय व्हिच सम पॉलीमर्स कैन बी डिग्रेडेड। तो द फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ पॉलीमर्स जो वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू डिग्रेड हो जाते हैं और दूसरे थ्रू यूवी लाइट। अलर्ट रहना। The cyclic peptide B is shown. Cyclic peptide B is broken into its monomers by heating under reflux with dilute hydrochloric acid. The amino acid, threonine, DHR, and two other organic products are formed. इसने कहा है two other organic products are formed. ये threonine का स्ट्रक्चर है, राइट? इस स्ट्रक्चर को देखो कहां पर अवेलेबल है, ये रहा वो स्ट्रक्चर, ये थ्रेओनीन का स्ट्रक्चर है, आप चेक करो। सही है, अगर आप टैली कर सके बॉन्ड्स, कार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ थ्रेओनीन। वो कह रहे हैं इसके अलावा दो और है, तो दूसरा ये रहा, ये दूसरा है। सही है, यानी ये क्या हो जाएगा COOH, ये क्या है CH2 और ये क्या होगा NH2, यानी ग्लाइसिन हो जाएगा। वो कह रहा है एक और भी है, वो ये रहा, ये पूरा। सही है, अब देखो क्या करूंगा मैं, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मिनट रुकें। इसको छोटा कर देते हैं। अब सबसे पहले यहां से इसको हटाएं, इसको OH में कन्वर्ट कर दें। सही है, यहां से इसको हटाएं और इसको NH2 में कन्वर्ट कर दें। एक तो ये बन गया और दूसरा ये था आपके पास NH2 CH2 CO and OH। सही है, ग्लाइसिन कहते हैं इसको, ये दो बने। बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे।
वो कह रहे हैं नेम टू एनालिटिकल टेक्निक्स दैट कुड बी यूज्ड टू सेपरेट दीस अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए हम एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री पेपर क्रोमेटोग्राफी भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम लिख लेंगे the amount of energy is released when 1 mole of gaseous atom is absorbed 1 mole of an electron ठीक है, define the term lattice energy। The amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from its gaseous cation and anion। मतलब now the next question is to use the following data and relevant data from the data booklet to calculate a value for the enthalpy change of formation of zinc bromide। You might find it helpful to construct an energy cycle। बेटा मैंने तो आपको एक फॉर्मूला दिया, मैं उस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा, मुझे एनर्जी साइकिल की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा H5A प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा H5D प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। डेल्टा H5F की वैल्यू वो कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। एटोमाइजेशन ऑफ जिंक गिवन है प्लस 131। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक डेटा बुकलेट से लोगे विच इज 908। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लोगे डेटा बुकलेट से विच इज 1730। आप जानते हैं कि एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन इज नॉट गिवन, इसका मतलब मुझे उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू लेनी है विच इज 193। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट मैंने 2 से डिवाइड करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास Br2 है, तो जब मैं 2 से डिवाइड करके आंसर निकालूंगा, लेट्स सपोज A आया, एक मिनट रुकिएगा 193 डिवाइड बाय 2 जी 193 बॉन्ड एनर्जी है ब्रोमीन की। एज पर कॉन्सेप्ट 2 से डिवाइड करूंगा तो 96.5 आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल। मसला ये है कि इस 96.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में 2 ब्रोमीन है, तो वैल्यू अगेन 193 हो जाएगी मेरे पास। तो डिवाइड बाय 2 करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं 193 को एज इट इज रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो Br2 के लिए। अच्छा, एक और मसला ये है कि ब्रोमीन जो है वो आपके पास लिक्विड स्टेट के अंदर होता है टार्टिक, तो आप इसको सबसे पहले गैस में कन्वर्ट करोगे, तो जब गैस में कन्वर्ट करोगे तो इसको कहा जाएगा वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू है +31। यहां पर भी एक मसला है, मुझे उसूली तौर पे 2 से डिवाइड करना चाहिए, तो 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। बट मसला ये है कि यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, तो मैं जब मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो वापस 31 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एटोमाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू है इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा 31। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन कितनी है मेरे पास, -325।
क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमीन है फॉर्मूले में, इसलिए उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू गिवन है मेरे पास, और लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू है -2678। इन तमाम वैल्यूज को प्लग इन किया, प्लग इन करके आंसर निकालूंगा, तो आंसर मेरे पास आएगा डेल्टा H5F का -304 किलो जूल्स पर मोल। सही है। H2 बॉन्ड्स कहां लिख सकती हो बेटा? नूर थोड़ा सा क्वेश्चन अपना क्लियर कर देंगे बेटा मुझे? सी पार्ट, the latest energies of zinc bromide, zinc chloride and zinc oxide are shown। ये नहीं, zinc chloride की ज्यादा as compared to zinc bromide। वो कह रहे हैं explain why there is a difference between the latest energy of zinc bromide and zinc chloride। आप जानते हैं chloride has a smaller ionic radius, तो zinc chloride exhibit a strong electrostatic attraction because of high charge density। फिर वो कह रहे हैं explain why there is a difference between latest energy of zinc chloride and zinc oxide। बेटा zinc oxide की charge density ज्यादा, electrostatic attraction ज्यादा, तो आप लिखेंगे zinc oxide has high charge density, so zinc oxide exhibits a strong electrostatic attraction thus its latest energy is highly endothermic। नहीं बेटा नूर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो उस वक्त होता है ना जब OH बॉन्ड, वो OH बॉन्ड तो बेटा एस्टर के बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो OH तो रहेगा नहीं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनेगा। Define the term standard cell potential। The potential difference of a cell when two half cells are connected together under 1 atm pressure, 298 Kelvin and 1 mole per dm cube solution। An electrochemical cell is set to measure the standard electric potential of a cell made of cobalt half cell and chlorine half cell। Complete the table with the substance used to make the electrode in each of these half cells। मैंने कहा था कि if ions are involved in the reaction, then platinum is used as an electrode। मैंने लिखा है नोट्स में कि if gases and ions are involved in the reaction, platinum is used as an electrode। वो कह रहे हैं use data from the data booklet to calculate the E0 cell। E0 cell कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा E0 cell equals to E0 right minus E0 left। E0 right
कोबाल्ट की वैल्यू आएगी विच इज 1.82 वोल्ट। सही है, ये डेटा बुकलेट से मिल रही है और इसकी वैल्यू है +1.36 वोल्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा आंसर आएगा +0.46 वोल्ट। यस 0.6 वोल्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं राइट इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। बेटा डेटा बुकलेट में ना इस तरह से लिखी हुई है कोबाल्ट की इक्वेशन। अब डेटा बुकलेट यूज करके आप आंसर निकालेंगे, एंड सिंस यू डोंट हैव डेटा बुकलेट राइट नाउ तो मैं इक्वेशन को इस तरह से लिख के दिखा रहा हूं। सही, तो मैं फाइनल इक्वेशन इस तरह से लिखूंगा 2 कोबाल्ट प्लस 2 क्लोराइड आयंस एरो Cl2 प्लस 2 कोबाल्ट प्लस। ठीक है, a fuel cell is an electrochemical cell that can be used to generate electrical energy. A methanol oxygen fuel cell can be used as an alternative to a hydrogen oxygen fuel cell. When the cell operates, the carbon atom in the methanol molecules are converted into carbon dioxide. Okay, ये equation आ गई। Calculate the volume of carbon dioxide in cm3 when current of 2.5 ampere is delivered for 30 minutes. ठीक है, बेटा बहुत आसान सा है। इसमें पहला स्टेप तो ये होगा कि मैं चार्ज कैलकुलेट करूंगा करंट इनटू टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करके। करंट मेरे पास है 2.5, चार्ज टाइम मेरे पास 30 है, मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60, तो 30 इनटू 60 इनटू 2.5 तो ये हो जाएगा 4500। सही, उसके बाद मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज को मैं डिवाइड कर लूंगा बेटा फैराडे कांस्टेंट से, तो 4500 को 96500 से डिवाइड कर दीजिए तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विच इज 0.0466 मोल्स। थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्वेश्चन की इक्वेशन में से मिल रहा है आपको 1:6। अगर आपने इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो बताइए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 7.77 into 10 to the power -3 मोल्स। 4 देखो, 1 मोल equals to 24,000 cm3। तो अगर आपने 7.77 into 10 to the power -3 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो बताइए ये कितना होगा? into 24,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 186.52 cm3। सही है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ओ पेपर खत्म हो गया।